luck for your the next workshops of your subject code. अच्छा जी. So what is the precis? What is preci? पढ़ा होगा आपने. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. It's written over here. Alright जी. Precis क्या है जी आपकी? Introduction. The term precis derived from the French word which means précis or expressed accurately. So it is derived from a French word, ठीक है, जिसका मतलब क्या है? It means to express accurately. When you are just trying to express something very accurately, यानी कि with authenticity, where there is no room available for any sort of you can say making mistake or any क्या कहते हैं wrong, ठीक है, or to make any sort, yes, कोई mistake ही है, ठीक है, or for wrong thing, so this is called a preci, ठीक है, something which can be expressed with authenticity, ठीक है. It also means an abstract or a gist of a longer passage. कहते हैं it also means कि वो उसका abstract है. Abstract किसे कहते हैं? तो आपके पास abstract art होता है ना, जो different तरीके की तस्वीरें लोगों ने लगाई जो समझ ही नहीं आती. ये क्या है? ये abstract art है, जिसे कुछ समझ नहीं आता, ये abstract art बन गया, right? ये वो वाला एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है. एक एब्स्ट्रैक्ट वो भी है जो मैंने आपको पढ़ाया था, टाइप ऑफ नाउन्स लाइक एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन्स. एब्स्ट्रैक्ट वो है जो आपकी इमेजिनेशन में है, और कॉन्क्रीट नाउन्स वो है जिनको आप टच कर सकते हैं, ठीक है. जैसे मैं कहूँ कि अलिशबा इज अ वेरी ऑनेस्ट गर्ल, या अलिशबा इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है. इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अलिशबा नो डाउट इज अ नाउन, ओके, बट इन जो आपके पास इंटेलिजेंट है ना, ठीक है, that is also a noun over here, but which type of noun? That is an abstract noun over here, ठीक है. और अगर मैं ये कहूं कि जी the table looks very dirty, अब ये कौन सा वाला नाउन है? टेबल यहाँ पर है बट इट इज अ कॉन्क्रीट नाउन, क्योंकि इस टेबल को मैं टच कर सकती हूँ लेकिन मैं उसकी इंटेलिजेंस को टच नहीं कर सकती, सो दैट इज गोइंग टू बी योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है. Then comes your definition. The précis is a clear, compact, and logical summary of a passage. It only preserves the essential points or the ideas of the original. Understand now? It says that it is a clear, compact, and logical summary of a passage. जब आप एक किसी भी चीज को बड़ा समराइज करके, प्रिसाइज करके आप लिखते हैं, जिसमें only facts and figures you are just adding up over there, excluding the elaborative or add up details over there. ठीक है. When you are formulating or designing a very concise summary of only which is based only upon the logical facts and the figure, so that is called a précis, okay. It only preserve the essential points or ideas of the original. कहता है इसमें सिर्फ ये preservance होती है जो original ideas हैं. Here you are not going to have a liberty of expressing your own opinions whatsoever the events have been occurred. आपने क्या करना है? उसको प्रेसाइज करके लिख देना है, ठीक है. इसे क्या कहते हैं जी? प्रेसी. और हम ये क्यों सिखाते हैं? बिकॉज जब आपके पास न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं, वो दे हैव बीन गोइंग टू सम प्लेस एंड दे आर रिपोर्टिंग अबाउट समथिंग लाइक दैट. So what they're going to do, they are going to email or just they are showing the content, sending you the content of 2-3 pages, ठीक है, or maybe 200-300 words. But you know, in the newspaper, you are not available with that sufficient space. So what to do now? So the editorials and the editorial staff that is there, what is there? Sorry, not the editorials, the editor in staff and sorry, the editor in chief. Sorry, okay, and all the other editing members. What they are going to do? They are going to make that story very crispy and short. So the one who are going to have an art on the précis writing, they will be highly paid person and they are going to work on it, ठीक है. उसको सारा उसमें से जिस्ट उसकी एक निकाल कर, एक ग्लांस उसकी एक झलक उसमें पूरी डालती हैं, सब चीजों को समराइज करते हैं और वहां प्रेजेंट करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड the précis writing. And the one who are having a very good command on this précis writing, on they are having a very good command on this editing and all this क्या कहते हैं जी, आपकी ये जो लैंग्वेज पे जिनको स्किल होती है, ये उनको असाइन करते हैं वो जॉब, राइट. And they are highly paid for that. Now then comes your importance. The life today has become over busy. Speed is now the essence of time, okay. Therefore well connected narrative paragraph or précis is needed. Shortcut has become a way of life.
everyone prefers shortcut to complete one's task. ठीक है जी. अच्छा जी, अब ये कोई जिस बच्चे की प्रेजेंटेशन में साइशा का आगे पोर्शन था वो बताने लगी. नाउ व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड प्रेसिस? There are 5 qualities of a good pressy. Number 1 is the clarity, correctness, objectivity, coherence and conciseness. Obviously clarity होगी, ठीक है. Clarity कब आएगी? First of all आपके पास क्या होनी चाहिए? Objectivity. दरमियान में आप देखें, ठीक है. Objectivity क्या है? मैं किस पर लिखना चाह रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है. बॉम्ब ब्लास्ट की स्टोरी है तो बॉम्ब ब्लास्ट पे पहले फोकस होगा. बंदे कितने मर गए उसके ऊपर बात आएगी. अब उसमें कितने बच्चे थे, कितने बड़े थे, ठीक है, किस जगह पर हुआ, ठीक है. देन कम्स हाउ हैपेंड, ठीक है. तो इसमें क्या है? सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? बॉम्ब ब्लास्ट. ओके. तो उसके बाद क्या है जी कि उसमें कितनी आप क्लैरिटी कितनी लेकर आ रही है. फिर आपने उसमें जितने भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आप ऐड कर रहे हैं वो कितने करेक्टेड हैं. बंदे वहां मरे 50, आपको बताया गया 30, ठीक है. तो उसके बाद फिर देखे जी वो जी फलां जगह से खबर आई है कि जी इतने बंदे वहां पर पहुंचाए गए हैं. अब जी वो पहले 13 थे, ये 30 थे, अब 32 हो गए हैं. हालांकि मरे पहले 50 ही होती है, बट दे आर नॉट गोइंग टू रिवील इट एट वंस. वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में वो जो उसकी डिसएमिनेशन उन्होंने करनी होती है न्यूज की या स्टोरी की, they are not going to over bombard with of the information to the innocent people because that is the trick of the media. वो आहिस्ता आहिस्ता इंफॉर्मेशन रिवील करेंगे और वो आप देख ले इवेंचुअली सुबह को हुआ होगा कि शाम तक उन्हें 60-70 तक पहुंचा देना है. हालांकि वो पहले हुए होते हैं और उससे ज्यादा अल्लाह ना करे वो ऑलरेडी मर रहे होते हैं लोग, लेकिन बताता कोई नहीं है. well this is all about your Pakistan, so not your Pakistan, my Pakistan also. तो ये हम लोगों की एक जो है ना वो एक रिचुअल है, हम लोगों के एक शामिल कर दिया गया है कि हम लोगों ने इस तरह की जो है ना वो कभी किसी तरह सीधी बात करनी नहीं है, हम लोगों ने घुमा फिरा के बात ही करनी है, ठीक है. ये मुसलमानों के अंदर मेरा ख्याल इनकी नस नस और खून में शामिल हो चुका हुआ है कि इन्होंने कभी भी कोई बात है वो सीधी बतानी नहीं है, राइट. तो उसके बाद जी उसके अंदर बात क्या आएगी? सो वी आर हियर विद ऑब्जेक्टिविटी, क्लैरिटी, करेक्टनेस. Then comes your coherence and conciseness. I told you what is coherence and cohesion. So coherence means how far you have produced the relevant content, and cohesion means you have built up the chain connection. ठीक है, एक सेकंड होल्ड करिए. हेलो, करेंगे. You are not available with any space over there. So the one who is going to have a good command on the English, ठीक है, or sorry on the drafting, the one is having a good command on the drafting skills, ठीक है, he or she is going to be wholly responsible for this activity. वो उसको सारा प्रिसाइज करके उसको वो जिसे आप हम जो प्रेसी पढ़ रहे हैं उसके अंदर वो देखते हैं, ठीक है, कि जिसकी वो आर्ट या उसकी स्किल है वो उसको प्रिसाइज करके उसको बताते हैं जी हमारे पास वहां पर 50 वर्ड्स की स्पेस है, इसमें पूरी आपने खबर बनानी है, ठीक है. सो वी आर हियर टू वर्क लाइक दैट. Yeah, these are the new standards. Beta, please hang on for a while and just excuse me for a minute. I have to go somewhere, but let me tell something. Hello. तो मैम आपसे रिक्वेस्ट जब आप जाती हैं तो सेशन एंड कर दिया करें प्लीज. बेटे ये खुद ब खुद ही सेशन एंड होता है, अभी मेरा ख्याल इसको छोड़ दिया करें, मुझे तो इनकी यूनिवर्सिटी की टाइमिंग का पता ही नहीं है. मुझे तो उन्होंने 4:15 से ये कहा था 6:15 तक, उसके बाद ये सेशन बंद ही नहीं होता. जब मैं देखती हूँ जी कि वो 6:15 है तो मैं अक्सर कर देती हूँ. कल तो खैर वो एक अजीब ही तमाशा था इनका. आई कैन नॉट कॉमेंट एनीथिंग अबाउट इट नाउ, सो लेट्स रीड अबाउट इट. बैक टू द वर्क अगेन. अच्छा जी, तो नंबर 1 नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी फीचर ऑफ योर प्रेसी, ठीक है. मे बी ये क्वेश्चन आ जाए लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके क्या इसके पॉइंट्स हैं. नंबर 1 इज योर क्लैरिटी, नंबर 2 इज योर करेक्टनेस, ऑब्जेक्टिविटी, कोहेरेंस एंड कंसाइजनेस, ठीक है. अच्छा जी, clarity means getting your message so that reader can understand easily what the writer trying to convey.
क्लैरिटी का मतलब ये है कि वट एवर द मैसेज यू आर गोइंग टू गिव इट टू द रीडर, इट शुड बी वेरी लाउड एंड क्लियर. ठीक है, लाउड एंड क्लियर मीन that it should be that should be written in an understandable language, so that the people who don't belong to a very literate class, and it shouldn't be confined to those class only. ठीक है, every common layman, ठीक है, it should be written in a way that every single common layman could be understand it. ठीक है, it should be written in that particular way. Correctness. Sentence out to be proper grammatical, punctuation and well spelled or free from any sort of error. आप ऐसे उसमें ग्रामेटिकल पंक्चुएशन आपने करनी है कि उसमें कोई भी तरीके की जो पंक्चुएशन, लाइक हमने पंक्चुएशन पढ़ी थी. ठीक है, फिर हमने ग्रामर की जिस वो पार्ट्स ऑफ स्पीच वो भी पढ़े थे. ठीक है, मैंने आपको बताया था दैट यू हैव टू फॉर्मुलेट और डिजाइन simple sentences. Sometimes you have to formulate compound sentences, and later the more complex stages, that is complex compound sentences. And there is only one criteria for designing these complex compound sentences. That is by using your colons, semicolons. Then comes your क्या कहते हैं, commas हैं, hyphens हैं. ठीक है, so you have to incorporate all these skills while you are punctuating your draft, just to make it understandable by the reader. Because wherever you are placing the comma, it means that you are you are transiting toward a new sentence. I'm repeating all those concepts again. When you are placing the colons, it means that there's still more information you wanted to go with. And when there is a क्या कहते हैं, एक sentence is going on and you just wanted to give more elaboration to the previous concept, but you know that this is the last concept I'm adding there. इसके बाद मुझे इसके अंदर कोई और आइडिया नहीं बताना, तो वहां पर आप कॉलन लगाते हैं. And where you are using the semicolon, you know that 2-3 ideas you are working with. ठीक है, और उनकी और इन दोनों तीनों जो आपने आइडियाज लिखी हैं वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट की एलेबोरेशन है. ठीक है, तो वहां पर आप सेमीकोलन इस्तेमाल कर लेते हैं. ठीक है, और हाइफन ये होता है कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट को नए कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करना है. ठीक है, जैसे ये आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट था वो आप आगे लाइन लिख चुकी हैं और आपने वो यहाँ आपको याद आया जी कि मैंने वो भी लिखना था, तो वो आप क्या करते हैं, यू आर गोइंग टू यूज अ हाइफन ओवर देयर, राइट. So this is the way of how of using these colons, semicolons and the hyphens. There are lot of क्या कहते हैं exercises sheets are available on using the colons, semicolons and the hyphen. और आप यहाँ पर एक इंग्लिश रीडर इंग्लिश रीड, हाँ जी, ऐसे करके कोई वेबसाइट है, वहां पर आप देखेंगे, वहां पर वर्केबल शीट्स होती हैं जो ग्रेड 6 और 7 के बच्चों की होती हैं, 6, 7, 8 के बच्चों की. ठीक है, आप लिख दें द यूज ऑफ कॉलन, सेमीकॉलन्स. ठीक है, फॉर ग्रेड 6 एंड 7 स्टूडेंट्स, वो आप निकालेंगे, उनको रीड करें और वो अपने आप को प्रैक्टिस करें, तो ये आपकी इंग्लिश वैसे ही बेहतर हो जाएगी, राइट. अच्छा जी, then mistakes which may occur are misspelled words, mistakes in facts and figures, mistakes in punctuation and mistakes of grammar and structure. अच्छा जी, then comes your third portion, that is your third point, that is objectivity. Objectivity means the ability to present opinions and personal preferences. The writer should adopt an objective approach, not add personal opinion and ideas. Okay, then coherence. Coherence means logical interconnection. Ideas should be well joined. Sentences should be interrelated. Then comes that is the same continuation of the previous concept. A good press is always coherent. Coherent मैंने आपको बताया था कि sequence of events को जो करते हैं उसे coherence कहती हैं, कि एक के बाद दूसरा आपने sequence बताया कि उसके बाद ये हुआ फिर ये हुआ. ठीक है, हम जू में गए, ठीक है, वहां पर हमने क्या देखा, फिर हमने आइसक्रीम खाई, ये किया वो किया, सिंपल सी एग्जांपल दे रही हूँ. ऑलराइट, तो ये इसे हम कोहेरेंस कहते हैं. ठीक है, बाय कोहेरेंस रीडर इजीली अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट्स. देन कम्स योर कंसाइजनेस. कंसाइजनेस मींस ब्रीफ एंड डायरेक्ट. ठीक है, कितना डायरेक्टली, एक देखा ना वो आपने शेक्सपियर ने एक बात कही थी, ब्रिविटी इज द सोल ऑफ विट. जितना छोटा कहा जाए, ठीक है, उतना ही वो बड़ा उसमें मीनिंग होता है. ठीक है, so conciseness means brief and direct. Conciseness is desirable quality of a good pressing. Use concise expression, avoid unnecessary repetition, convey information clear and efficiently. ठीक है जी,
Then rules for writing a précis. Now tell me any problem till yet, because we are available with 20 more slides to go. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें. अच्छा अच्छा अच्छा, 60 मिनट्स बाद का दोबारा ज्वाइन हुआ था. ऐसा ना हो कि कल 6:15 के बाद 60 मिनट्स और लॉग इन रहना पड़े. बेटे, गॉड ब्लेस यू टू यू एंड टू योर यूनिवर्सिटी. व्हाट कैन आई से. समर खान ने क्या शेयर कर दिया यहाँ पर? व्हाट इज दैट? अच्छा जी, ट्यूशन टीचर्स, टीचर्स के लिए है भाई ये. बेटे मेरे पास पहले बड़े व्हाट्सएप के ग्रुप है, मुझे मत ये लिंक भेजे. मैं पहले इस व्हाट्सएप की कहानी से तंग हूँ. ये ग्रुप ज्वाइन कर लें बेटे. मेरा ये एक ही ये था ये, बस उसके बाद आई एम डन. यहाँ वैसे भी आवाज नहीं आती. इट्स लॉट ऑफ यू नो इट्स स्ट्रेस. अच्छा, जिसको छोड़े मुझे बताएं. प्रेसी में अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? बिकॉज देन वी आर लेफ्ट विद 15 more minutes to go. All right, then let's proceed with the next slides. There are 16 rules for the Prezi writing. Number 1 is careful reading, outline, understanding, underlining, omission. Don't omit length, indirect speech, own wording, avoid giving opinions, paragraph form, tenses and person, no change in meaning, art of compression, rereading, and conclusion. Careful reading. First, read the passage again and again until you understand the meaning of the passage. The more you read it, the more you familiar it will become to you. Try to read it thrice to make the subject clear. Outline Gaji. Usually, one is asked to supply an outline for a précis. While reading the original passage, think of some words, phrases, or short sentences that will sum up the main subject of the passage. ठीक है, वो कहते हैं सबसे पहले आपको पता ही आउटलाइन क्या होती है. यू नो दैट सबसे पहले आप उसको फ्रेम आउट करते हैं किसी भी चीज को. आपने अपना टॉपिक सेलेक्ट किया, देन यू जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट कि मैं सबसे पहले हेडलाइन ये बनाऊंगी, लेटर मैं उसके अंदर बॉडी में ये ऐड अप करूंगी. ठीक है, जैसे आप लोग हेडलाइन और अपना न्यूज स्टोरी स्ट्रक्चर करते हैं. So when you are going to work with the précis, you have to outline the figure that what are the most striking components over here, and what are the basic logical information I have to deal and just have to bring into light first. ठीक है, and the later the less important details. ठीक है, they will be following the preceding pattern. ठीक है, so here we have to outline the figures. ठीक है, the facts and the figures in a very chronological and in the rational way. Okay, then understanding the paragraph. Read the passage attentively and try to understand the main theme of the passage. Try to get the idea what the writer is trying to convey. Obviously we have to understand the paragraph. We need to understand कि writer आपसे बात क्या करना चाहता है. What does he wanted to communicate? What sort of the news you just want to share in the public, so that it will be very catchy and the crispy one, and just attains or just hook up or engage the reader's attention. ठीक है. Then comes your underlining. Underlining is mark the important ideas and essential points from the original text. Omission. Omit all the unnecessary. Omission कहते हैं delete कर देना, eradicate कर देना. ठीक है, omit कर देना. ठीक है. Omit all the unnecessary information or long phrases which could be replaced by one word. All the objectives and adverbs can be omitted in order to make a good précis. ठीक है. Don't omit. What? क्या omit नहीं करना? While writing a précis, the writer should omit the important points and ideas which are essential to be described. Length. Keep the fact in your mind that the length of the précis be 1/3 of the original passage. Count the word if you find that it is too long. क्या वो कह रहा है? Keep the fact in your mind that the length of the précis be 1/3 of the original passage. ठीक है. आपका क्या है, जो पूरी आपकी प्रेसी है ना, वो जो आपके 3 हिस्से, जो आपके 3 पार्ट्स है ना, 3 जो पोर्शंस आपके,
वो आपकी अननेसेसरी डिटेल है, आपने प्रेसेस सिर्फ एक हिस्से में लेकर आनी है, 1/3 के अंदर आपने करना है। अच्छा जी, indirect speech. Passage should be written in indirect speech. If there is direct speech in the passage, it should not be changed into indirect speech. Own words. A passage should be written in your own words and should abstain from borrowing word from original passage. आप इसको अपने अल्फाज में लिखते हैं प्रेसी को, ठीक है, आपने ये नहीं कि वहां पर लिफ्टिंग की है और आपने एज इट इज ही लिख देना, ठीक है। सो यू जस्ट नीड टू रीफ्रेज ऑल दोस सेंटेंसेस एंड यू हैव टू राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। अवॉइड गिविंग ओपिनियंस, यू आर नॉट सपोज, ये मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेसी में हमेशा ओपिनियन नहीं लिखते, जो फैक्ट्स एंड फिगर लिखते हैं दूसरे दिए हुए उनके साथ आप वर्ड्स को प्ले करते हैं और उनको अपने लफ्जों में रीफ्रेज करके आपने ऐड कर देना, राइट। सो यू आर नॉट having any sort of liberty of adding your own opinion, like you are going to have a liberty in your feature writing, जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था, कॉलम में भी आप कर सकते हैं बट नॉट इन द न्यूज राइटिंग, ठीक है। एडिटोरियल में भी आप ऑब्वियसली आप करते हैं, ठीक है, अपना ओपिनियन देते हैं, फीचर में, एडिटोरियल में, कॉलम में देते हैं, लेकिन न्यूज राइटिंग और प्रेसिंग में आप नहीं करते हैं। मगरिब की जाने हो रही है, बट व्हाट कैन आई डू, आई हैव टू स्पीक, अल्लाह माफ करे। एनीवेज, अच्छा जी, अवॉइड गिविंग ओपिनियंस, यू आर नॉट सपोज टू गिव एनी कमेंट्स अप्रिशिएटिव क्रिटिकल ऑन द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज। बेटे ये अजान हो जाए थोड़ा, आई थिंक वी शुड वेट, ठीक है। मुसलमानों को तो अलावा कोई पेपर में नहीं आना, जो मैंने आपको बता दी है। ये सेशन भी 5:10 पे दोबारा रीस्टार्ट हुआ था। वेरी गुड, थैंक यू रिशबा, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स बेटे, गॉड ब्लेस टू यू, स्टे हैप्पी। लेट्स सी जी, मैं अब इसको लॉग ऑफ करूँ या ना करूँ, नो आइडिया अबाउट इट, लेकिन मैं इसको ऐसे ही छोड़ी क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पर आ रहा है टाइम 4:15 का ही जब लॉग इन हुआ है। आप 5:10 कह रही हैं।